پاکستان کا کوئی سب سے بڑا وکیل ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب ہے. پچھلے 40 سال سے یہ اپنی کیپیسٹی میں جو پاکستان کی اور امریکہ کی دونوں ممالک کی جو خدمت کر سکتے تھے کہ دونوں ممالک کے درمیان برج بن کے ان دونوں ملکوں کو قریب لانا. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب پچھلے 40 سال سے کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو دونوں ممالک میں جب بھی کوئی مسائل پیدا ہو یا پہ گیپ نظر آئے تو اس ٹائم پہ جو ہے ڈاکٹر صاحب اپنا پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں. اور ہمیشہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے کرائسس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ہینڈل کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے اور ہم جو پاکستانی ہم لوگوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہماری کمیونٹی میں موجود ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو دن رات خدمت کی ہے. تو 2 دن پہلے نیو جرسی میں آئے تھے تو مجھ سے بات ہی ہمیشہ جب بھی آتے ہیں شفقت فرماتے ہیں تو ملاقات ہماری لازمی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ چند دوستوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے جو یہاں کے حالات ہیں کووڈ کی وجہ سے ہم اس طریقے سے پروگرام نہیں کر پا رہے جیسے کبھی ہم کرتے تھے. مگر ایک تو یہ تھا کہ ملاقات ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے بات چیت ہو جائے کہ دنیا میں اور اسپیشلی جو ہمارے خطے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں جو نئی نئی ڈیولپمنٹ آئے دن ہو رہی ہیں ان کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو ایک چیز پہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا وہ ریپیٹڈلی بات کی کہ نیو ورلڈ آرڈر اور ان کا جو اثر ہو رہا ہے پورے ورلڈ میں اور ہمارے پورے ریجن میں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی موضوع پہ کہ نیو ورلڈ آرڈر اینڈ پاکستان اس پہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا ہم سنتے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا تجزیہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے شروع کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور سوال آئے تو وہ اس بات چیت کے بعد جب ہم اوپن کریں گے فلور پھر بیٹھ کے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزوں میں بھی بات ہوگی. کشمیر کے بارے میں بھی آپ جو سمجھتے ہیں یا باقی جو بھی معاملات ہیں ان کے بارے میں. تو اب میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب تھینک یو ویری مچ. یو ہیو بین کائنڈ اینڈ ویری گریشیس کہ آپ نے دوستوں کو پتہ کیا بڑے پیارے دوست نبھایا. ویری گریٹفل اینڈ ایک اپرچونیٹی ہے بیکاز وی آلویز لرن فرام ایچ ادر. وی ڈونٹ لرن تھنگس اباؤٹ لائف فرام دی بکس دیٹ وی لرن فرام ایچ ادر. وین فرینڈس گیٹ ٹوگیدر they always learn from each other, and it's a good idea that you want to be together this evening with such good friends. اور وہ دوست ہیں آپ کے they also have a very good level of awareness. They are ماشاء اللہ سب سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں, تھنکنگ لوگ ہیں. ان سے بیٹھ کے تو اور بھی بندہ جایا کرتا ہے کیونکہ there is no end to learning. Everybody is learning. So everybody is student. I am a student. I have to learn from others. جہاں تک تعلق ہے آپ نے جو بات کی, I never have been an agent of any country. I always have been an ambassador of goodwill for Pakistan, and the objective was and is somehow America still remains an important player in a critical country. So our relations with America are not simply important, they are critical. And that was the central theme, and that was the reason that whenever people came to Pakistan,
I always make sure they should go and meet Americans who are running this country. They should know what is something different they are doing, what is something better they are doing. After all, इनमें वो कौन सी ऐसी बात है? अमेरिका का emerge होना as the most powerful nation state in the recorded history of mankind is not an accident. They must be with the mightiest military machine and highest capability. They must be doing something different, better, harder. इस एंगल से मैंने ये सारी एफर्ट्स को सस्टेनेबल किया. अपना एक पर्सनल पैशन था जिसकी वजह से मैं इसमें एंगेज हूँ, इन्वॉल्व रहा हूँ. क्योंकि I always thought myself that we must work with the American institutions where decisions are made. That is very critical. The people who make the decisions or who influence the decision-making process. Try to know them. Try to cultivate them. Become them. And then you can only bring both sides together so that they can remain engaged in constructive dialogues. If you know people on both sides, how can you bring both sides together if you only know one? So I had a unique, I was lucky, a privilege to say, it was a hard work, but people here, as well as people back in Pakistan, जो लोग हैं, इनको इकट्ठा करना, टेबल पे लाना, negotiation, discussion, so that they learn from each other, about each other. So that was basic objective and regional security issues में बहुत था US-Pakistan relations. US-Pakistan relations not that simple. They are very complex and very difficult to get. But at the same time, they are critically important. इस एंगल से कि जो लोग हमारे डेलीगेशन भी आते थे तो एम्बेसी वाले मुझे कहते थे कि आप भी करा सकते हैं. तो उसमें राजा साहब को बिजनेस टू पता उसमें आइडिया यही होता था कि वो लोगों को मैं कईयों को खुद लेके जाता था, कहाँ से मिलो ताकि ये लर्न करें. We must know the American system. Until you know and understand the American system, how can you get help from the Americans? It is very important, and that can only happen if you get engaged, if you work with them, and you learn from them, and the same knowledge, same skills you can use to get advantage and help from the system when needed. This is something which there are not many people engaged in it. Washington DC में I don't know any second person. And the consistency, the sustainable, the commitment or capacity ho, he is willing to commit so many things for this goal, for this objective. जो राजा ने बात की कि he was in आप उसमें कोई मीटिंग एक थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 2 दफा आए थे during his this last tenure, global tenure. तो दोनों दफा एम्बेसी ने मुझे कॉल किया, दोनों दफा सरकार ने आते ही मुझे कॉल किया कि we had dinner together, and then both time he requested me कि डॉक्टर साहब जब हम प्रेसिडेंट ओबामा से मिल लें तो जो ब्रीफिंग देनी we will prefer to give it to your friends. क्योंकि एम्बेसी वाला का तो कोई काम कर रहा है. And both time Prime Minister to give briefing भी after meeting I will उसमें every person who met her तो मेरा काम जो करने का था ना वो मैंने गोल डिफाइन किया कि कौन से थिंक टैंक हैं वर्क ऑन सल्वेशन, कौन से लोग हैं who are scholars, thinkers, authors, researchers, anthropologists. उनके साथ पे मैंने it was a very big group. It was a very big group. और अमेरिकन बल्कि मुझ पर चार्ज लगाते हैं कि जी तुम्हें
एम्बेसी डायरेक्ट करती थी। मेरा उनके साथ पॉइंट थ्रू होती रहा कि यू आर वेरी रॉन्ग, यू आर मिसइंटरप्रेटिंग इट। Embassy cannot directly, because I'm not an IAS. Embassy can request me, and this is only happened that they requested me. तो इन्होंने फिर मसलन एक में मिसाल दूंगा, देयर आर सो मैनी। ये 2011 में जब ये सलाला ट्रेजडी हुई हमारे बॉर्डर पे 26 सोल्जर प्लस देयर कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट जनरल थे बनी नेशनल गनशिप्स। तो पाकिस्तान ने उस इन्वेस्टिगेशन इन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का बाइकआउट विल नॉट पार्टिसिपेट। मैं यहाँ पे था तो पाकिस्तान में बातें हो गई हैं, अगर ऐसे हुआ बाइकआउट में ये रखता तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है और हमारे वो कंसल्ट नहीं करते। आई मीन इवन इफ यू हैव अ गुड केस, इफ यू डोंट हैव एन अटॉर्नी, how can you bring the case? Entirely on my own. मैंने आज तक भी कभी गैस से टॉकिंग पॉइंट नहीं लिया, क्योंकि अगर डिप्लोमेटिक रोल वर्चुअली डिजास्टर डिसअपॉइंटमेंट इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है दुनिया में कहीं भी नहीं। नंबर वन, तो मैंने कहा कि इट्स टाइम कि आई शुड प्ले सम। तो उनके जो हमारे ड्रेसमैन, he was special assistant to the president on Afghanistan and Pakistan. He was a very good man. 1999 में he was chairman of the International Religious Commission. Chairman? Commission on Religious Freedom. International Commission on Religious Freedom. That is mandated by the Congress. Mark Grossman. वो मेरा दोस्त साहब इसलिए बना के उसने उसको मुझे इन्वाइट किया to give a testimony जब वो फिर about the state of minorities in Pakistan। इस पे मैंने टेस्टिमनी दी जाती। उसने वो मेरा दोस्त था, तो मैंने भी उसको कॉल किया, I want to meet special guy। He was good to me always। उसने मुझे 2 दिन की अपॉइंटमेंट दी थी। मैं आपको इसलिए इंसिडेंट कोट कर रहा हूँ कि दिस इज द एरिया एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू वर्क इन दिस कंट्री। दिस वाज माय अप्रोच एट लीस्ट, आई कैन बी रॉन्ग बट दैट इज हाउ आई वाज अपडेटेड। मैंने कॉल किया तो उसने 2 दिन की 48 आवर्स की अपॉइंटमेंट दी। फिर आई डिड नॉट नो कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तान। आई हैड टू नो दैट साइड ऑफ द स्टोरी। सो मैंने डीओ को कॉल किया, मैंने कहा आई वांट टू मीट यू। वहाँ पे डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थी, उसको मैंने देखा इन्वेस्टर नहीं था। मैंने कहा जी क्या पॉलिसी है? कहती जी हमें टैक्सेस आ रही हैं स्टेट पुट पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में। डोंट से एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग, डोंट स्पीक रिगार्डिंग सलाला। हाँ सारा है। तो फिर मैंने डीए से मिला, मैंने कहा जी आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान क्योंकि आई एम गोइंग टू मीट सच ए सच पर्सन। वो बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था स्टेट डिपार्टमेंट हमारे लिए। तो उसने मुझे स्टोरी बताई तो आई वाज रियली इट्स सच ए गुड केस टू प्रेजेंट टू एनीबॉडी कि पाकिस्तान के साथ जाए। तो मेरे दिन में ये था कि इस साल आर्टिकल वो रेमंड डेविस का इंसिडेंट हुआ था, इंटायर अमेरिकन सेंटिमेंट बढ़े। फिर उसके बाद उसामा बिन लादेन का उससे पहले हुआ था, उसमें भी इंटायर अमेरिकन सेंटिमेंट बढ़े। फिर जब 36 बंदे हमारे मरे थे, अमेरिकन सेंटिमेंट जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट वो और भी क्लियर प्रेस करे थे। तो मैंने कहा कि हम यूसुफ की जानती क्योंकि हमारी गाँव जो बाती है। तो जैसे वहाँ की आप बात कर रहे थे, वन आर 15 कैन वन अफोर्ड दी वन। अगर ये बात होगी तो इंडिया बहुत पहले हमसे जान सकता है। द ओनली रीजन दे आर नॉट engaging in war with us, they think it's too high a price. Not that they will lose it, but the price is too heavy to win it. Anyway, तो उसमें भी मैंने स्टोरी ये उन्होंने बताई मुझे कि वो बॉर्डर पे जो हमारी चेक पोस्ट थी वहाँ पे इनके गनशिप्स आए एंड दे स्टार्टेड
डायरेक्टली हॉट लाइन पे कहते हैं हमारी, हमने कॉल किया कि ये क्या कर रहे हैं आपको, वो किलिंग और उनकी बस। तो मेरे भी ये था कि on one hand we are partners with America, on one hand we are players with America on war and terrorism, and this is how they are treating their own partner. तो उसमें वो गनशिप जी उन्होंने कहा वो सारी उन्होंने वापस चले गई गनशिप and they came back again. This is the actual story. वो कहते कि बता दो, हमने कहा जी हॉटलाइन थी, लेकिन वो अपना काम करके गए। मतलब सेकेंड टाइम आए उनका आने बस इन स्पाइट ऑफ द मैसेज कि यू आर किलिंग आउट। तो मैंने कहा तो ये तो